ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ मे भी ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସେତିକି ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବି ହେଇଥିବ ବିକଜ ଓଡ଼ିଆ 100% ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ मैं ओडिया बुझी पारे कही भी पारे किंतु ऑनेस्टली ये प्रथम थर मु एते यू नो लगातार ओडिया रे कथा कहूची तो आई वुड से ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉर्ड जगन्नाथ एक्चुअली मते मो रूट संगे रे रिकनेक्ट कर देले आ एते डीपली रिकनेक्ट कले दैट आई एम सो प्राउड एंड आई वुड से कि यू नो मो ये गर्वर कथा कि मु कलियुग रे मु सेई लैंड टू अच्छी जो लैंड टू लॉर्ड जगन्नाथ अछंती एटा पढ़ी सारा पर इवन गोटे छोट पिलाटे भी जगन्नाथ संस्कृति उपर 4 लाइन सहजरे सरलरे कहि दे परिबो कुआ जाए प्रत्येक ओडिया घरर बड़ पुओ जगन्नाथ सी आम पई तो केबे जने ठाकुर नहंती सब बेले सी आम परिवार जने सदस्य सो जगन्नाथ संस्कृति रो ओरिजिन ट्राइबल ओरिजिन टू स्टार्ट हेची सबरा ट्राइब नीलाचल फॉरेस्ट सीए कहले कि मु बनेबी आपण मते कहंतु किंतु मोर गोटे कंडीशन अछि कि 21 दिन जाके मु बस एका काम करिवि मते किए डिस्टर्ब करिवनी तले किंग तांकर कंडीशन मानी गले 14 दिन जाके से काम कले आवाज आसुथला बनुथला तापरे सडनली आवाज बंद हो गला एंड क्वीन गुंडीचा तांको कहले कि सी ओल्ड कारपेंटर देखंतु कहीं ऐसा तो नुह बीमार हो जाइची पड़ीची आ आमे देखुनु कौन पता किछि हेई जीवो तेणु सी किंग दरवाजा खोलिले कारपेंटर तो नथला किए नथला एंड व्हेन ही ओपन द डोर सी देखिले जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा रो फॉर्म्स अनफिनिश्ड तेणु सी एमती भगवान चाहिए मु ए फॉर्म रे आसीबी बट आई बिलीव कि भगवान जगन्नाथ हमको कहिवा को चाहउचंती कि in this world true power does not come from display it comes from depth शालीबागा आमे कहूँ मल्टीकल्चरलिटी ही वाज अ ग्रेट एग्जांपल तांकर माँ वाज फ्रॉम अ हिंदू ब्राह्मण फैमिली तांकर बापा ही वाज फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली गोटे दिन तांको बहुत ज्वर हैला एंड ही वाज इन बेड वेरी वीक चली पारु नथले सेते बेले तांको माँ तांको कहले कि जगन्नाथ भगवान को मने करो तांको डाको सी तोर ज्वर भल कर देबे सी तोर धियो भल कर देबे और नेक्स्ट डे सी माने भल हे गला आउ सी मंदिर गले किंतु तांको एंट्री दिया गलानी बिकॉज फादर वाज अ मुस्लिम इवन तो तांको एंट्री मिललानी दैट्स व्हेन ही कंपोज द पोएम द जो भजन जो पोएम भजन आले नीना सहिलो बट ये देखो टू द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग दैट आमे तांको मंदिर रे केबे एंट्री मिललानी सी केबे जाई भितरे जाई पाइले नाही किंतु तांकर गीत आजी ओडिसा रो प्रति घर भितरे एते रेगुलरली जाउची आजी डेट भितरे दैट्स हाउ जगन्नाथ जी रो कृपया है सी यू नो ऑर्डिनरी डिवोटी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेमस करी दियो तो बही रे भी मु स्टोरी लिखी छी माने स्टोरी माने बंधु माती रो स्टोरी रघुदास रो स्टोरी सबु मैडम आपन को बही लेट मी जस्ट शो टू द व्यूअर्स फर्स्ट जगन्नाथ स्टोरीज ऑफ फेथ एंड डिवोशन इंग्लिश रे दिस बुक कुआ जाए प्रत्येक ओडिया घरर बड़ पुओ जगन्नाथ सी आम पई तो केबे जने ठाकुर नहंती सब बेले सी आम परिवार जने सदस्य जहांको ठारू आम जीवन आरंभ हुए आ सरी गला पर भी सेठी जाई कि मनुष्य निजर मुक्ति पाए तबे रथयात्रा रे समय रे जगन्नाथक विषय रे आमे केते जानिजे रथयात्रा विषय रे आमे केते जानिजे आमे सब बेले कहू जे जगन्नाथ आमर अति निजर आम अति आपणार किंतु आमर अति आपणार मनीष विषय रे जगन्नाथ आम पई मनीष ही अति आपणार मनीष विषय रे आम बापा आम बड़ भाई विषय रे आमे केते जानिछु तेबे आज गोटे बहुत भास्ट टॉपिक गोटे बहुत बड़ टॉपिक जगन्नाथ संस्कृति और ता ऊपर आलोचना तेबे आज एमती गोटे टॉपिक ऊपर आमे डिस्कशन करिया पई जाउछु जहाँ प्रकृत पक्षरे साधारण ओडिया मानकर जानिबा पई बहुत आवश्यक रिसर्च बहुत बड़ कथा स्कॉलर्स मानक डिस्कशंस बहुत बड़ कथा इन डेप्थ डिस्कशन बहुत बड़ कथा किंतु साधारण मनीष जानि पारुथिबा साधारण मनीष बुझी पारुथिबा ओडियाक जगन्नाथ किए से विषय आम आज कथा हबा हम सहित अछंती एमिति जणे गेस्ट जे आईआईएम इंदौर पास आउट जे ओडिया माटीर झियो
बाहर बढ़ी पाठ पढ़ी आउ जिते जगन्नाथ संस्कृति विषय से जानिले चिन्हिले जड़े कॉर्पोरेट कोच कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हे कि भी सी ओडिया संस्कृति सहित जड़ित हवाई आज गोटे बही लिखिले आ सी बही एथि लिखिले जे ओडिशा बाहर थिबा लोक माने जगन्नाथ को बुझंतु आउ जेमिति ओडिया घरे बुझंती सेमिति बुझंतु तो बहुत बड़ प्रयास आउ बेसी समय न लेट्स वेलकम आवर गेस्ट स्मिता दास जैन मैम नमस्कार मैम वेलकम टू नमस्कार वनस्मिता वेलकम you टू so much. मैडम आपणको बही let me just show to the viewers first Jagannath Stories of Faith and Devotion इंग्रजी रे this book इंग्रजी भाषा रे आपण जगन्नाथ संस्कृति विषय रे अति सरल भाव रे लिखिले जति कि मु पढिली कालिठु आज भितरे गोटे साधारण लोक ताको पढि के बुझी परिबा कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन जे बाहर रही बाहर पाठ पढ़ी बाहर बड़ हेथिबा गोटे झियर जगन्नाथ संस्कृति पाई इंटरेस्ट केमिति आसला इंटरेस्ट तो वनस्मिता पिला बेलू तो थला कहीं यू नो इवन दो लाइक मो डाडी आर्मी रे थले तने मो ओडिसा टू बाहरे जन्म ओडिसा टू बाहरे हेली मेनी टाइम मतलब सारा स्कूलिंग बाहरे थला किंतु वन थिंग वाज कॉमन डेली संध्या बेले मो पेरेंट्स प्रे करूथले एंड मो डाडी माने देयर वर मेनी गॉड्स इन आवर टेंपल किंतु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र वर द प्रोमिनेंट गॉड्स इन दैट टेंपल and mo bado heichi mo daddy ku ale nilo sahilo gito se bhajan suni suni kiri तो पिल्ला बेलू तो मोर इंटरेस्ट थला because that was the most prominent god we worship even though we were outside तापरे of course मु कॉलेज गली मु जॉब कली I married a non ओडिया family मो husband UP टू कि मोर मैरिज भुवनेश्वर हेतला तेणु मैरिज बेले से माने सब पूरी आसथिले पूरी बुलले सेते बेले से माने जगन्नाथ जी धामर दर्शन कले आ तापरे मैरिज परे मोर हस्बैंड डेली देखुचंती मोर 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 अभ्यास मु बिना सखाळे प्रे करी बिना ब्रेकफास्ट खाएनी ओके और मो हस्बैंड देखुचंती कि मो डेली प्रे करे एंड अगेन इन माय टेंपल जगन्नाथ इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड देयर आर अदर गॉड्स आल्सो किंतु जगन्नाथ जी कर माने सबुठु आगे रे मु पूजा करे ओके तो वन डे लाइक मु 5टा बही लिखि सारी थली ये लास्ट ईयर रो कथा मु मोर कॉफी कन्वर्सेशन मु मोर हस्बैंड संगे रे कथा होतली मु कहले मु जानि पारुनी नेक्स्ट को टॉपिक रे लिखिबी व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक सीए मते कहले कि स्मिता जगन्नाथ विषय रे काई की बुझुनु माने कंसीडर राइटिंग अबाउट जगन्नाथ मु दटे डेली देखुची एते वर्ष 20 वर्ष बा हे गलानी कि तू डेली प्रे करूछु and mu to kichi jani ni see he's not from Odisha he's from UP right so I am very curious what beyond Puri what beyond Jagannath Dham se kiye au besi English literature mu a visare paini I am sure jodi tame ye visare likhibo people will like to read mu nije padiba ko chai before he stopped speaking about that idea as a writer you know like what topic interest you mate setti ki bele interest asila ti thik achi this is a topic I should attempt writing because it's challenging मैडम आपण जो टॉपिक ऊपर वर्तमान लिखी चंती जहाँ पर आपण इंटरेस्ट आछि लिखिया पई दैट्स एन ओशन गोटे बहुत बड़ समुद्र जगन्नाथ of course mu jani chi banata and being a devotee I know see God the divine is always vast yes and being from Odisha I know like आपण कहिले कि सबु घर रे जगन्नाथ अछंती right मोर सी अटेम्प्ट नाही कि मी से समुद्र कैप्चर करीबी ओके एंड मु आगे रे कहि दउची नोवेयर इन द बुक मु ये क्लेम भी करूनी मु करि भी परिबिनी कि आई एम एन हिस्टोरियन आई एम नॉट क्लेमिंग मु स्कॉलर बहुत बड़ा पंडित आई एम नॉट मे बी इन सम अदर सब्जेक्ट बट डेफिनेटली ऑन नॉट ऑन दिस सब्जेक्ट बट आई कैन क्लेम मु गोटे कथा बड़ा सिंसियरली बड़ा कॉन्फिडेंट कहि परिबी आई एम अ डिवोटी मु पिल्ला बेलू तो जगन्नाथ को प्रे करी करी बड़ हेची मु पिल्ला बेलू तो आजी जाके तांको डेली प्रे करे एंड केबे भी व्हेन आई गेट स्टक इन समथिंग मोर फर्स्ट यू नो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर से बिलीफ अछि कि कोठी भी मु फसीबी मते भगवान जगन्नाथ पार करेइबे एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन लाइफ तो मोर से ही अटेम्प्ट अच्छी सो दिस बुक जगन्नाथ स्टोरीज ऑफ फेथ एंड डिवोशन इट्स नॉट अ हिस्ट्री बुक ये फिलॉसफी बही नुआ ये स्कॉलरली बही नुआ इट्स अ स्टोरी टेलिंग बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ डिवोटी मु ये कैप्चर करिवार चेष्टा करिछि कि बियॉन्ड पुरी बियॉन्ड व्हाट
most people know what Jagannath Bhagwan achanti tankar Puri temple dham, which is one of the char dhams. Beyond that, for people outside Odisha, I move faith accessible କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲି. I wanted them to know about this God, and I want them to know about one of the most sacred and ancient traditions of India. So that was my attempt, and I want this is written for people like me and you. Yes. Simple people who are not scholars, जो भगवान विषय रे बेसी जानिବାକୁ चाहुचंती, and leave aside the divine. They just want to know more about our संस्कृति कौन, our culture कौन, our heritage कौन, in a non-preachy manner. ଯଦି ମୁଁ କହିବି, okay, like, so if I give a fact, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଞ୍ଚ, okay, that's a fact. For people who are not like historians or who are not researchers, why would this fact interest them? Okay, किंतु ମୁଁ ତାକୁ story format रे, you know, if you see the book, ସବୁ fact story रे, it's like in one of the sentence. बड़ा naturally आसुची. It's like fact is not presented for a fact perspective. It is integrated very naturally into storytelling. So I'm an author. This is my 6th book. This is my attempt through stories, making Lord Jagannath accessible to all corners of the country, in all corners. Odisha re to, you know, everybody knows Lord Jagannath. I need introduction. He doesn't need any introduction. My attempt is beyond Odisha. Okay, starting from outside Puri, then going beyond Odisha, and then even the younger generation who are not that much connected to spirituality and tradition. This is my attempt to make them know who Lord Jagannath is. Jane, just a person, if he doesn't know about it, then how he will start with this research? So this can be considered as a book. ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପଢିବା ତେବେ the awe of Jagannath Sanskriti. That's what I can say that. Yes. ମୁଁ ତ ଏଇ କହିବି ଯାହା ମୋ research. Okay, so this book is ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପଢିକି ବି ଜାଣିପାରିବ starting ରୁ ଯେ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି and actually ମନ୍ଦିର କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କଣ, ରଥଯାତ୍ରା କଣ, ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଲା, can the person read? Exactly. Okay. Yes. So ଯଦି ଆପଣ book ଦେଖିବେ, it's divided 6 section ଅଛି book ରେ, starting from origin. And origin is not from Puri temple. Origin is before. Then if I may interrupt you, please. ने एठु टिके ଆମେ start କରିବା point by point. मते आपण कहि परिबे माने for the viewers जो माने actually जहांको पाई आपण बही लेखिचंती सेमाननको आपण कहि परिबे जे जगन्नाथ संस्कृति रो origin कोन? Okay. So Jagannath Sanskriti ro origin, tribal origin to start heji. Sabara tribe, Nilachal forest, Vishwavasu karikiri, Sabara tribe ro chief thala. One normal evening, he just got up and he saw blue light everywhere. And he was like, "Kotu ya asuji." Ye bas blue light follow kala. And from there, he saw like there is like a blue sapphire, jaku kahanti. Later it was termed as Nilo Madhava. ମାନେ ସିଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲେ, ପୁଣି next day ଗଲେ, then his wife started noticing, then the other tribal people, he was the chief of the tribal Sabara tribe, they started noticing. धीरे धीरे ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଗଲେ, pray କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, and it was just like a, you know, a blue sapphire, but then it has conch, disc, the other symbol, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ pray କରୁଥିଲେ. ଗୋଟେ ଦିନ କିଏ ସାଧୁ ଆସିଲି, ସେ କହିଲେ this is Nila Madhav, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ Nila Madhava ପଡିଲା. So actually that is the origin. Now if I go back even further and ବହି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, there is a saying in literature, not saying, like there are some texts in Odia Mahabharata and other literature that Jagannath, of course, Jagannath Vishnu avatar, it is actually when Lord Krishna left, you know, when Lord Krishna died, Treta Dwapar Yug setebele sorila, and then that is where the beginning of Kali Yug happened. And jetebele, you know, if you read the story here, Krishna ji ro body mane pura burn hi nathala. They tried, and then the unburnt parts of his body se samundra re bahala. Brahma. And after that, basically, gotte dino Nilachal forest re Nila Madhava asile. Nobody knows ki ekdam se kemti asikali sei jaga re, kintu seithi asile. And that's where your connection kafi mane, you know, scholars kahanti that okay, Lord Krishna galle
तापरे लॉर्ड जगन्नाथ आसिले ताले नीलमाधव इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वन ऑफ दोज अनबर्न पार्ट्स जो समुद्र रे चरीथला. So if we go further, ये origin, but then actual origin is Neelamadhava. And tapare puni, people started worshipping Neelamadhava. From the Sabara tribe, then, word Felila, it reached kingdoms and all. Then King Indrayumna of Avanti, siye sunile about Neelamadhava, and he wanted to see. First, he sent Vidyapati, who is the priest in his kingdom, कि तमे जाइंकरी पता करो. Vidyapati, after a lot of this thing, Vishwavasu, he actually married Vishwavasu's daughter Lalita. कितने वर्ष पर सीए नीलमाधव को देखिले. That also Vishwavasu blindfold करिकरी नहीं जाइथले. So रास्ता रे से mustard seeds डालिले so that पुणी से return करी पारिबे ताले से route जानिबे. Then he took King Indrayumna, सी तांको नेइकिरी गले सेठी कि एठी नीलमाधव थेले. किंतु सेई जगह रे जेतेबेले King Indrayumna गले, नीलमाधव had vanished. सी नथेले. And he got very upset कि अरे मु भगवान तमको आपण को देखिबा को आस्थली आपण नथले मते एम्ति काई की कर देले. सेते बेले सी तांको ड्रीम रे आसिले, माने केते टाइम परे भगवान कहले कि मु तते मिलिबी, मु तते वुड फॉर्म रे मिलिबी. And after the very next few days से पानी रे से देखिले log float करूची, which was termed as Daru Brahma. दारू पुणी तांकर ड्रीम रे आसिकिरी कहले मु एठ होई आसीबी मते नै जा. से तापरे पुणी हला अच्छा ये लॉग टू भगवान केमती बनिबे. देन अगेन भगवान तांकर ड्रीम रे आसिले कि मोर जागा ये मो पई गोटे होम बना, स्थान बना जोठी मु रही पारिबी. जेते बेले मो घर तैयार हबो तापरे मु आसीबी. So that's why first Neelamadhava asile, puni Daru Brahma asile, that log of wood. तापरे मंदिर बना हैला, not in the form कि आमे एबे जानिचु, because there were like original temple माने it's credited कि King Indrayumna of Avanti करथले. तापरे तो shape form बहुत change हेची. There were many invasions, तेणु reconstruct हैला, पुनी new wings बनिला. Into the first thing तेणु construct हैला because King Indrayumna चाहुथले मो भगवान को मु देखि पारिबी, सी आसीबेनी जेपंत तांकर घर बनिबेनी, तो मु नीलाचल फॉरेस्ट रे तांका पई घर बनाए भव्यतर तु. तेणु दैट वाज द ओरिजिन ऑफ पुरी टेम्पल. सीए हैला तापरे दारू ब्रह्मा आसिला. तापरे तो आउ कहानी कि सीए जगन्नाथ केमती बनले. बट दैट इज द ओरिजिन फ्रॉम नीलमाधव टू दारू ब्रह्मा टू पुरी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड. एंड देन इन द सैंक्टम सैंक्टोरियम दारू ब्रह्मा आसिला, पुणी से कंस्ट्रक्ट हेले इनटू द फॉर्म्स वी नो टुडे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा. ओके आपण आपणको रीडर्स मानक पई कहबा पई चाहिबे कि जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आज जो फॉर्म रे हमें देखुचे, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट, केमती से रहले सेही फॉर्म रे? हाँ, सो अगेन नॉट एन हिस्टोरियन, किंतु ड्यूरिंग द कोर्स जब ये बही लिखुथली, अपॉन माय रिसर्च एंड अपॉन टॉकिंग टू सम ऑफ द पंडिट्स दैट आई कुड, सो से मंदिर बनी गला, से दारू ब्रह्मा से सैंक्टम सैंक्टोरियम रे रखा हैला. इनिशियली किंग इंद्रयम्ना जो कार्पेंटर जो माने टूल मेकर्स को डाकेले, तांकर सब टूल्स ही फेल ही गला. दे ट्राइड किंतु द चिजल्स द टूल्स किछि चालिला काम कलान. यस, तापरे पुणी ना ही वाज वरीड. देन गोटे ओल्ड कार्पेंटर आसिला अनंत महाराणा, कहंती देखो डिफरेंट लिटरेचर, को ब्रांच कहे कि सी विश्वकर्मा रूप, को कहती कि से लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड जगन्नाथ ही अनंत महाराणा करिकरी आसतले. बट सम डिवाइन फॉर्म दिस नोन. सी कहले कि मु बनेबी, आपण मते कहंतु, किंतु मोर गोटे कंडीशन अछि कि 21 दिन जाके मु बस एका काम करिबी, मते किए डिस्टर्ब करिवनी, किए ये जो कहंती कि सैंक्टम सैंक्टोरियम मंदिर चैम्बर्स जो थी भगवान रो चैम्बर, किए सेठी आसीबेनी, मते डिस्टर्ब करिवे. तले किंग तांकर कंडीशन मानी गले. 14 दिन जाके से काम कले, आवाज आसुथला, बनुथला. तापरे सडनली आवाज बंद हे गला. ऑन द 14th डे जेतेबेले साउंड आसिला नाही, द किंग एंड क्वीन तांको रानीर ना गुंडीचा थला, द गुंडीचा टेम्पल तांको ऊपरे ना रखाइची. तेनु सी दे गॉट वरीड. एंड क्वीन गुंडीचा तांको कहले कि सी ओल्ड कार्पेंटर देखंतु कहीं ऐसा तो नु बीमार हे जाईची, पड़ीची, आ हमें देखुनु कोन पता किछि हे जीवो.
ତେଣୁ ସେ କିଙ୍ଗ ଦରୱାଜା ଖୋଲିଲେ कार्पेंटर तो नथला किए नथला एंड व्हेन ही ओपन द डोर से देखिले जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा रो फॉर्म्स अनफिनिश्ड सो दैट्स व्हाई एंड ये जो डेटीज अछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दे आर अनलाइक any other deities you will find in India because you know the lord we worship usually most of the lords finished forms made of like marble or some other The fancy versions stone. that resemble to humans. Yes, But our exactly. Jagannath doesn't resemble the normal human hato godo thibo and all. Absolutely. So Jagannath Balabhadra ro hatare fingers nahi, godo nahi. They don't have eyelashes and eyebrows. Devi Subhadra ro hato nahi. So that is the form. So ye kahanti because King Indrayumna time to agere kabata kholle, tenu forms unfinished thela. That is the origin. But again, as a devotee, I believe there is a very, very deeper meaning. So, okay, continuing the story first and then I'll go to the deeper meaning. ଇନ୍ଦ୍ରୟମୁନା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ସିଏ ତ ବହୁତ ଡିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଆଗରେ ମାନେ ସନ୍ତାପ କଲେ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ମାନିଲି ନାହିଁ ମତେ 21 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବାକୁ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି ନା ତମେ ପୁଣି ବନି ପାରିବନି ମୋର ଭୁଲ ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ ରେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ରୟମୁନା ମୁଁ କଲିୟୁଗରେ यही ଫର୍ମ ରେ ବର୍ଷିପ ହବାକୁ ଚାହୁଛି यही ମୋର ଫର୍ମ ଯାହା ହେଇଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାଠୁ ହେଇଛି ତତେ କିଛି ଦୁଃଖୀ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ यही ମୋର ଫର୍ମ ମନ୍ଦିର ଓପନ କର डिवोटीज मते यही फॉर्म रे कहिब सो वन origin काहेकि फॉर्म सेमती बिकॉज ऑफ दिस सेकंड आई वुड से ये गॉड रो ही विल बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड सब भगवान रो विल थुई तो बनी जी पूरी टेम्पल बनिला कहीं भगवान लॉर्ड किंग इंद्रयमुना ड्रीम रे आसिले कि मते एमती दरकार अछि Right. तेणु से एमती भगवान चाहिए मु ए फॉर्म रे आसीबी बट आई बिलीव अगेन एज अ डिवोटी द डीपर मीनिंग बिहाइंड दिस इज कि भगवान जगन्नाथ हमको कहिबा को चाहुचंती कि इन दिस वर्ल्ड पावर डज नॉट कम फ्रॉम परफेक्शनिज्म true power does not come from display it comes from depth भले ही मोरो मैंने I am not a complete And form Out bahya swarupa mane the outer appearance, that's always not the rightful thing, but the inside what is there that Exactly. matters. You have said it beautifully, Manasmita. So, bahar okay, appearances are deceptive. Don't judge someone by their appearance. Yes. See how sincere, how The devoted. knowledge, Yes. the reality of the person. Exactly. So that's what. And I think there is no better medium than God would have chosen. से निजोकु ही example बने किरी से ये message humanity को दबा पाए यही form रे आसिले. श्री जगन्नाथ आमे नॉर्मली देखिचे विष्णुଙ୍କର ସବୁ स्वरूप आपण जदि पढिथिबे विष्णु पुराण स्कंद पुराण रे मेंशन भी आपनको बही रे अछि तो विष्णु महापुराण रे आपण देखिबे सब बेले जणे अवतारंकर अवतारी थांती सपोज बराह बराही एंड नरसिंह नरसिंही नारीसिंही तो सबुर अवतार रे सीए तांको पत्नीଙ୍କ सहित विष्णु और लक्ष्मी पूजित हुअंती बट दिस इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जोठी कि जगन्नाथ तांको स्त्रीଙ୍କ सहित नुहे बरं तांको भाई और भौणीଙ୍କ सहित बसिचंती सिंहासन रे इजंट दिस डिफरेंट It is. Yeah. And again, आपण बहुत भलो पॉइंट आगे आनिले सो सिंहासन रत्न सिंहासन रे से तांकर भाई भौणी सागरे गोटे तो ये भी अछि जगन्नाथ एंड पूरा हिंदू सेक्ट जदि आपण देखिबे that is the these are the only deities जहाँकर फॉर्म से ए फॉर्म रे ओरिजिन हेथिले ए फॉर्म रे पूजा जानती like if we look at Lord Rama Lord Krishna से पिल्ला रे जन्म हेथिले just like human form and then they grew up and the form in which we worship them is the grown up form किंतु ये लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड बलभद्र लॉर्ड सुभद्रा ये ए फॉर्म रे आस्थले सो इट इज आल्सो सेड दैट ये अंकर ना भगवान पिल्ला ही अछंती से बड़ ही नाती एंड पिल्ला रे यू नो दैट सिबलिंग बॉन्ड मैटर्स मोर that is the relationship that matters most so the purity that innocence that is a unique thing about Jagannath culture it celebrates the sibling bond तेणु if you know mo bohi re one of the section I've dedicated entirely to this bond
the power and the calmness that Lord Balabhadra जो म्हणजे से जगन्नाथ को provide करथले, the generosity of Devi Subhadra से केमती माने famine वेले and all, there is this, there are a lot of stories in Odia devotional literature से केमती मंदिर टू बाहरे आसिकिरी, you know, she guided women कि आस मंदिर रे एठी अछि धान घरी का एठू नहीं जाओ, so that you don't suffer because of the famine. So it's because of that, you know, that generosity, that innocence of childhood, the play games which I have described in the book. ये आपण rightfully कहले, this is not there in any other deities of in the Hindu religion that we worship. Yes, absolutely. तेबे रथयात्रा ऊपर भी आपण लिखिचंती, वर्तमान तो रथयात्रा समय आउ रथयात्रा गोटे बहुत लंबा अवधिरु ओडिसा रे पालित होची, जहा कि वर्तमान ओडिसा रा परिचय जगन्नाथଙ୍କ देश बोली परिचय आम ओडिसा रा, ता व्यतिरेक किछि भी नाही। आउ गोटे हिस्ट्री रे हमें देखिले भी आम राजा भी जगन्नाथଙ୍କ सेवक, राइट। तो रथयात्रा आम पई गोटे फेस्टिवल तो कहि हेबनी, गोटे गोटे समय जेतेबेले कि आमे आम ठाकुर आम पई बाहर के आछंती, दैट्स द प्राइड दैट वी होल्ड बीइंग द पीपल इन ओडिसा, पीपल ऑफ जगन्नाथ स्टेट। सो आपण कहि परिबे जे या ऊपर आपनकर पॉइंट ऑफ व्यू कोन रहबो? So right from my childhood, पिला बेलुथु, I have always looked at Rath Yatra at this grand celebration of India's heritage and culture. And of course, it has religious connotation, and आपण जेमती rightfully कहले, for me this is one example and one unique example where God comes outside his abode to meet the devotees, than the other way around. But like for a layman, for an ordinary person, before being a religious procession, it is a cultural celebration. So this is something unique, a 9-day festival. Not only Lord Jagannath, तीन जण, Lord Balabhadra also, Devi Subhadra also, they come out, and it, you know, when I was researching for this book, it was interesting to me कि यार preparation बहुत आगरठ आराम है. Like, you know, the chariots are made every year, and even like the rituals, it actually starts with the Snana Vyatha, where, you know, they basically bathe Lord Jagannatha, Balabhadra and Subhadra with 108 pots of water, and after that he falls sick just like you and me, just like any human. So for me ये तो मोर पाई बहुत ही unique थिला, that अंकर human tendency अच्छी. And then after the Snana Bath, then comes a period of Anasara. So for 15 days, because gods are ill, so they are resting. So even though the temple is open, दर्शन करी पारिबेनी, as in the sanctum sanctorium, काहेकि से सेठी नहांती. After then they recover, like as per the niti they recover. पूरी रथ यात्रा आरंभ है, and then से सांको सबु पेशो करांती, and then they decorate, they bring them out. And what fascinated me was the Chera Pahara tradition, where Gajapati of Puri, he sweeps the chariots after the gods are seated, and tapare chariot hoy. To me, that is like, you know, ये सबुटु बड़ो message कि भगवान अगरे किए राजा किए प्रजा सबु equal. So more than, you know, that being, I would say, a religious festival, it is for me a celebration of equality and a celebration of culture. पुणी सीए जिते बेले ये हेई जाए चेरा पहारा पुणी, you know, रथ rope to pull है, millions and millions of devotees, heavy chariot, but still ये बड़ा easily pull हेई जाए. Why? One is of course God's will, but I think सेठु भगवान ये भी बतईवा को चाहुचंती कि, you know, if we stand united, जदि हमें समस्तो, you know, if we come together, if we as humans come together, को भी complex काम हो इतने easily जीवा आपको जाना भी पड़ेगा. So that I think is the greatest example of the unity, where we and this is where this festival, you know, for 9 days people forget everything when they come to Puri, and khali Rath Yatra re bas chariot pull. Then from there he goes to the Gundicha temple, Badodanda too. That's like, you know, so one day Puri, that one Rath Yatra day, Puri completely transforms. And again, the ceremony backs in Northern Pare Asanti. It's like, okay, he's again giving a message that what goes around comes around. किछि परमानेंट नाही, मु आजी जाऊची काली पुणी आसी, नेक्स्ट ईयर पुणी बाहरी. तेणु material things in life don't matter. What matters is being in the moment,
and it does not matter कि आपनकर state, you know, what is your status, कितने wealth अच्छी, whether you are a prince or a pauper. What matters is the devotion that you have for me. And so in simple layman terms जदि मु कहिबी, for people who are outside Odisha, रथ यात्रा 9 दिनर फेस्टिवल जोठी लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा मंदिर तो बाहर आसंती 9 दिन पाई से डिवोटीज को मिलंती, पुणी 9 दिन परे गुंडीचा टेम्पल टू जगन्नाथ टेम्पल फेरंती एंड मझिरे आई मीन बहुत रिचुअल्स है मझिरे गोटे अछि नीलाद्री बीचे जोठी ये कहंती कि महालक्ष्मी तांकर कंसोर्ट तांकर वाइफ सीए रागी जाइचंती कहीं तांको छाड़ी किरी सी चाली गले भाई भौणी सांगे गुंडीचा टेम्पल जो कहंती कि माने कहंती कि गुंडीचा टेम्पल रे जगन्नाथ भगवान कर माउसी घरे चाली गले मते छाड़ी किरी तेनु से आसंती देयर इज लाइक अ रिचुअल नीलाद्री विजय जोठी से किछि माने मनांती तांको कि उठी जाउचु मान मु पुणी आसी गली ना एनी तो पाखरे तापरे माने महालक्ष्मी मानंती तापरे ये जगन्नाथ रसगोल्ला टेम्पल जानती हां छेनापोड़ रसगोल्ला मिठा देकिरी तांको माने राग शांत करिवा पई जते बेले कहंती कि महालक्ष्मी जी शांत हे गले तापरे से जानती. So that is the ritual. I would say कि again for a I mean, if a person is very spiritual, very religious, of course it has a religious connotation. But for even ordinary people, I can't claim that I'm very religious and all. But for ordinary devotees, or for people who are like lover of India's tradition and culture, I would say it is one of the biggest real-time living example of celebration of Indian culture on a grand scale. Yes. If you say you used the term ordinary devotee, sadharana bhakta, what is the meaning of it? I mean, जगन्नाथଙ୍କ भक्त भितर किछि सेगमेंट्स अछि कि साधारण असाधारण, एंड हाउ मेनी भक्तस डू यू नो ऑफ जगन्नाथ जो माने कि आजि आमे से माने वी सेलिब्रेट देयर भक्ति, सो कैन यू टेक फ्यू नेम्स? जहाँ मु कहू छी ऑर्डिनरी डिवोटी, एक्चुअली भगवान जगन्नाथ एमतिया भगवान जो he doesn't differentiate between his devotees. तांको पाई समस्ते equal. Ordinary devotee or a regular devotee is a term that I as a human is using to refer to those people जो माने who are not like वो पंडित भलिया नुह जो माने जो पूरी टेम्पल पंडित हमें जानी चंदी तांको रिचुअल्स केमती केते सबु नीति, and that life is something you have to be very committed and I would say a hardcore devote. Again, it's in my terminology. So, I tanku refer karuni. When I say ordinary, it is like a person like me. And there are examples of ordinary devotees in Jagannath Sanskriti. Exactly. Also. I'll come to that. But when I say ordinary devotees, it is people like me जो भगवान को मानती, pray करती, maybe daily, maybe weekly, maybe you know when they want to pray. So they believe कि life रे beyond this human realm, there is a bigger force. Yes. That is what I meant by ordinary devotees who are not priests, who are not scholars, but they just believe in the power of God. Now, there are a lot of devotees of Jagannath. मैंने बहिरे बहुत अच्छी. I'm not talking about my book. I'm talking about the Odia Jagannath literature, which is very, very rich. I can't even claim कि मो कहले I would only claim मो भी बुते अधा जानी थे भी. But one of the person, Shalivaga. Okay. So interesting here. आमे को जो multiculturality, he was a great example. तांकर माँ was from a Hindu Brahmin family. Tankara Bappa, he was from a Muslim family, and so he was born or brought up in that environment, which was a multicultural environment. Pilla vele ankara hamesha yahi thala. He could not identify with anyone because you know when sometimes it happens, apna multiple cheeze follow karo, you don't know what is that one thing which you resonate the most with. गोटे दिन तांको बहुत ज्वर हैला and he was in bed very weak, चाली पारु नथले. सेते बेले तांको माँ तांको कहले कि जगन्नाथ भगवान को मने करो, तांको डाको सी तोरो ज्वर भलो करदेबे, सी तोरो धियो भलो करदेबे. तांको बिलीव हैलानी कि तांको माँ ऊपर बिलीव थला, तेणु सी जगन्नाथ रे ना देले. और नेक्स्ट डे सी माने भलो हे गले.
So that's why ମାନେ ସି ସେତେବେଳଠୁ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ମାନୁ ନଥିଲି ଫିର ବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲ ତାପରେ ସିଏ you know which is like devotee of Lord ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସିଏ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଗଲାନି because father was a Muslim so that's why ଆଉ ଫିର ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କମ ହେଲାନି even though ତାଙ୍କୁ entry ମିଳିଲାନି that's when he composed the poem the जो भजन जोटा आपण poem कहले जो सुनती भजन आले नीना सहिलो I mean ମୁଁ ତାକୁ ପିଲା ବେଳଠୁ ଶୁଣିଥିଲି but it is only when I researched about this book that I knew about the origin so he composed the bhajana he sang it outside the temple ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇକट्ठा ହେଇଗଲେ and ତାପରେ I mean he composed other bhajans also but this is his most famous bhajan and to me okay I don't know whether I can now maybe when he started he was an ordinary devotee for me he is not maybe he's in that category but ye dekhon to the beauty of this thing that ame ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲାନି ସିଏ କେବେ ଭିତରେ ଯାଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆଜି ଓଡିଶାର ପ୍ରତି ଘର ଭିତରେ ଏତେ ରେଗୁଲାରଲି ଯାଉଛି ଆଜି ଡେଟ୍ ଭିତରେ that's how जगन्नाथ जी रो कृपया है सिए you know ordinary devotee को भी extraordinary famous करी दियंती गीतरे भी लिखिचंती जे कहे साल बेग हीन जातिरे मु जबन श्रीरंगा चरण तळे मागु अछि शरण so the here why I mentioned this ma'am by interrupting you because this is the thing that we actually celebrate in Jagannath Sanskriti हमें ए जिनसटा को सेलिब्रेट करू जोटा कि आपण माने being a you know being a devotee you feel emotion when you are speaking about Jagannath you feel emotion when you are speaking about Salavega and all because somehow you are connecting with that person and ओडिसा रे प्रत्येक मनीष निजको सेही गोटे गोटे भक्त मानक सहित कनेक्ट करके फील करे जे तुमको सी डाकिला आसिला मु डाकिला आसलानी such kind of emotion we have for Lord Jagannath that's something which is so beautiful actually really I know and in fact वो बहिरे भी मु स्टोरी लिखिची माने you know स्टोरी माने बंधु मातीर स्टोरी रघुदासर स्टोरी सबू जोतिरे लाइक सेते बेले भी माने लॉर्ड जगन्नाथ को डाकुथले as if सी सांग केमती कहीं कल अच्छा तमे तांकू पठेइलो काली कहीं कलनी मोर काली तुमे तो नहीं तूरे कथावार्ता चले एठी जगन्नाथ से माने मु कहि परिबिनी जगन्नाथ को टू मु तेणु करूची किंतु मु जानी छि एठी एमती चले किंतु फॉर मी he is on a pedestal मु तो भाभी भी परिबिनी कि मु लॉर्ड जगन्नाथ को टू कहिबी so I was coming from that perspective or even otherwise for that matter what a story अछि बहिरे where you know when Jagannath devotee when he fell ill Lord Jagannath and Lord Balabhadra nije asthale tankara mane na kapda dhoikiri taku Madhav Das kapda dhoikiri au tanku mane na bimara seva karikiri to me like when I researched and I came across that story I'm like okay empty bhi achi it was like such a revelation ye again you know this closeness between human and divine in the deity form only like Lord Jagannath mane human form re asle but he is not a god who we relate with a human form unlike other avatars of Vishnu like Lord Rama and Lord Krishna so for me it was like so beautiful that kaun ordinary and kaun like I don't think भगवान रो वैसे भी को कैटेगरी होती तेणु हमें कहो ना लॉर्ड जगन्नाथ राउंड आईज ये समस्त को समान भाव रे देखे so that is what it is there is no sect the only thing is you should have faith and devotion in your heart and भगवान आपको को ना को फॉर्म रे जरूर दर्शन करी गोटे बहुत पर्सनल क्वेश्चन पचारली आपण बाहर रहउथले मे भी आपण को ओडिया सेति की फाइन नहे तो आपण रिसर्च कला बडे डिफिकल्टी भी हेथिबो बिकॉज़ ओडिया 100% न जानिबा जग एते ऑनेस्टली हेलानी दैट आई एग्री विथ यू मैं ओडिया बुझी पारे कहि भी पारे किंतु ऑनेस्टली ये प्रथम थरो मु एते यू नो लगातार ओडिया रे कथा कहूची द रीजन एज यू नो एज आई मेंशन कि मोर जन्म ओडिसा बाहर हेइथली my dad was in the army
ଜାଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢିଛି ଓଡିଶା ପିଲା ବେଳଠୁ was a place where ମୁଁ vacation ରେ ଆସୁଥିଲି by the time my dad retired and ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଘର କଲେ I was already like started my career in Gurgaon ସେବେଠୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି but coming to the question research actually ଏତେ difficulty ହେଲାନି the reason being one temple administration ର records English ରେ ଅଛି even जो पुरानास for that matter online ସବୁ word by word translation it's available in English and also with tools like translation tools जो ओडिया text मिलला it became translated into English in in seconds so actually research रे difficulty हेलानी because I had the right translation tools and all हाँ किंतु गोटे कथा मु कहूची आजी मु आपनक संगे बसीची जेते मु कहली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मेनी डेज माने घरे ऑफ कोर्स माने भुवनेश्वर आसी मु ओडिया रे कथा कहे किंतु on a topic on a specific topic it's a formal conversation not a casual conversation ये प्रथम थरो I don't know after ages maybe the first time कि मैं formal conversation where the primary language is ओडिया ये मो पाई प्रथम न मु गोटे कथा जरूर कहबी मुझे थोड़ा डिसाइड कली लास्ट ईयर दैट ओके आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू राइट अ बुक अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ एंड द मोमेंट मु मोर रिसर्च स्टार्ट कली since the first day itself I started feeling more connected to my roots like whenever somebody asked me I always said I was an Odia it came naturally but then because I was never based here so I would say I mean there is a thing okay I am from Odisha and there is a thing you get deep emotion when you say hey I am from Odisha more a deep emotion nathala now when I started researching I started knowing more about the god jahan ko mu pray karuthali and ebe bhi mu pray karuchi in the process mu research start kali Lord Jagannath upare kintu journey mojhire mu पूरी विषय एते फैक्ट्स डिस्कवर कली ट्राइब्स ऑफ ओडिशा विषय एते फैक्ट्स डिस्कवर कली ओडिशा विषय इटसेल्फ मु एते फैक्ट्स डिस्कवर कली I felt so much proud of being from Odisha so I would say during the process Lord Jagannath actually mate mo root sangere reconnect kar dele au itte deeply reconnect kale that I am so proud and I would say ki मते बहुत गर्व अछि कि मु जहाँ भी कहले माय ओरिजिन इज फ्रॉम दैट लैंड जो टू लॉर्ड जगन्नाथ अछंती इन द एज ऑफ कलियुग आई वुड से ओके आई मीन ऑफ कोर्स हमें बहुत गॉड को वर्शिप करू बट लॉर्ड रामा हैड ओरिजिन्स इन त्रेता युग लॉर्ड कृष्ण रो द्वापर युग थला कलियुग रे तो विष्णु रो अवतार ये एंड मु एते माने मो पाई ये गर्वर कथा कि मु कलियुग रे मु सेई लैंड टू अछि जो लैंड टू लॉर्ड जगन्नाथ अछंती आ आजी मु आपनक संगे रे बसी छी जहा भी मु जेमती भी ओडिया कहूची बट आई एम कॉन्फिडेंट आई एम एबल टू मेक माय फीलिंग्स नोन आ ये कॉन्फिडेंस आसी खाली लॉर्ड जगन्नाथ सकासे कि सीए मते एते काबिल बनै चंती कि आई कैन स्पीक ऑन अ सब्जेक्ट सच एज हिम I mean, as I said, I am no one. सीए भगवान मु के मु गोटे ऑर्डिनरी पर्सन किंतु मु एठी आपन को संगे रे बसी किरी ए सब्जेक्ट विषय कथा कहि पारुची इन अ लैंग्वेज जो थरे मोर मास्टरी नाही I think there can be no bigger example of equality before the god and again as the forms of Lord Jagannath Balabhadra and Subhadra tells us perfection does not matter. What matters is how pure your heart is, how sincere your heart is. Yes. And mu ye jani chi ki okay, I am mistakes hei thabo and I am not an expert in the subject. Maybe there are 10 things I know, there are 90 things I may be acquainted, kintu I haven't gone deep. किंतु मु ये जानी छी कि जहाँ मु लेखी छी मु बहुत सिंसियरिटी टू लेखी छी दिस इज अ वेरी सिंसियर अटेम्प्ट आ मु जानी छी लॉर्ड जगन्नाथ सेठी बसिकरी से जानी चंती कि मु मोर सिंसियर अटेम्प्ट करी छी एंड सबुठ इम्पोर्टेंटली आपण जो बहीटा लिखी दैट इज एक्चुअली फॉर पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड ऑफ ओडिशा ओडिशा बाहर रहउथिबा किबा भारत बाहर रहउथिबा प्रवासी ओडिया जो माने
फॉर देयर लिविंग दे स्टे इंटरनेशनली जो माने ओडिशा बाहर रहउछंती लैंग्वेज से तो जति कनेक्टेड नाहंती सेमानंक पाई इट कैन बी अ वेरी बेसिक गाइड बुक दैट विल अंडरस्टैंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड माने बुझिबा पई साहाय्य करिवो जे सब छोट बड़ जिंस माने एटा पढ़ी सारला परे इवन गोटे छोट पिलाटे भी जगन्नाथ संस्कृति ऊपर 4 लाइन सहजरे सरलरे कहि दे परिबो एंड दिस अटेम्प्ट इज रियली गुड रियली नाइस ऑफ यू कारण ओडिसा रे ओडिया भाषा रे किंबा बहुत हाई लेवल रिसर्च लैंग्वेज देकी एंड रिसर्च फैक्ट्स देकी बहुत सारा बही लिखा है नो डाउट जगन्नाथ संस्कृति ऊपर रिसर्च fills I think hundreds of libraries all together without a doubt निश्चय भाବରେ किंतु आपणकर जो इनिशिएटिव जे ओडिशा बाहर किंबा भारत बाहर रहुथिबा ओडिया माननक पई जगन्नाथ संस्कृति को गोटे छोट बही माध्यम रे कनेक्ट करबा एंड डिस्पाइट यू नो हाफ ओडिया बट आपण इंग्लिश रे लिखिचंती कारण से माने बुझी परिबे प्रॉपर्ली दिस इज रियली यू नो a very you know a proud thing I can say and I'm happy that you have done it jane odia jane झियो माने she is also 6 times TEDx speaker also but still माने सब जिनस साइड रे रखी की ओडिया भाषा ऊपर रिसर्च करबा ओडिया कल्चर से तो केमिति जगन्नाथ संस्कृति कनेक्टेड छोट छोट जिनस बाहर लोक मानक पई करबा इज अ गुड थिंग आई अप्रिशिएट यू थैंक यू बाहर लोक तो मु जानिनी सी ऑल इंडियंस आर वन आई बिलीव मोर ये थला one even within Odisha the younger generation who is not as connected as like let's say our generation or our parents generation. Second, people outside Odisha because mate ye lage you know Jagannath is too much of a divine form to confine to Odisha and yet ye impression achi acha Jagannath he is niche khali Odisha or Bengal re and I think more ye attempt achi ki okay kainki Krishna is known Lord Krishna is known as the god of all Lord Rama we can't say that he belongs only to UP even though the temple is at Ayodhya you know Lord Jagannath sangere I thought ki ye achhi misconception okay he is like only like an Odisha regional god एटा भी आ गोटे भी हमें दोष हम निज को दबा कारण आमे जगन्नाथ को नेकी एते पॉजिटिव आमरो दैट्स व्हाट वी से आउट ऑफ इमोशन वी से कि अम्म जगन्नाथ माने जेमति कि मो बापा मो छुआ मु काकू देबनी इट्स लाइक दैट्स अ वेरी बेसिक इमोशन I know कि जगन्नाथ yes या अमर जगन्नाथ किंतु आमर जगन्नाथ does not mean से समस्तंकर जगन्नाथ हे परिबनी so that was my thing कि एमती काहेंकी कि मो तरफ तो कौन करी परिबी ओके मु बस ये कि मु डिवोटी अछि मु राइटर आगे रे मु 5टा बही लिखिची so I know storytelling let me make Lord Jagannath accessible to all and beyond the land of Odisha Odisha रे तो समस्ते जानि चंती but beyond that be it in India be it outside let them know about the richest sacred culture of India. It's not Odisha, it's a UNESCO heritage thing. Yes. So we should know more about our heritage through a simple attempt, stories. See, history, you know, all these heavy subjects. सहज सरल stories माने गोटे कहानी ता ऊपर just very basic. So गोटे कहानी 2 to 3 pages. I don't think any story would be more than 500 to 600 words. Yes. For every story, though, the research would have been 3 times than the story that is there. But that is my attempt. I wanted to make faith accessible. I wanted to make Jagannath known to all beyond this holy land from where I come from. आउ गोटे कथा सी आजिकाली बहुत busy life. People are running after wealth. People are unhappy. There is an urgent need कि still her, थेर, बस, बुझ, तापरे act करो. So in this busy life, people need that calmness, that stillness. So मोरो ये बही देखिबा पछरे ये भी attempt हैला that okay let readers read even if like whether religious non-religious what age it does not matter but they want peace they want calm in this world of chaos come read 1 or 2 stories absorb go to your life in a you know reflective you have got a new outlook then again when you feel that lack of stillness ye bahire dubara asa that's why these stories definitely. And that's why the short ones and your Odia is very cute I must say most importantly viewers manku कहया पई चाहिबी जे आपण don't judge a book by its cover
even though she is talking in half odia आपण कहि परिबे बुझी होची बुझी sometimes जदि आपण किछि डाउट भी हैला you can just directly connect to her mo तांकर Instagram handle details भी दे देबी but the interesting fact is ओडिशा बाहर आमे सिना ओडिया को बुझुचु संस्कृति कला सहित आमे कनेक्टेड अछु ओडिशा बाहर रहउथिबा लोक माननकु ओडिया भाषा और जगन्नाथ संस्कृति सहित कनेक्ट करि परथिबा वुमन शी एंड एटलीस्ट ट्राई करिसेंती जहा को नै कि हमें बहुत एप्रिशिएट करबा कथा आई पर्सनली आई एम हैप्पी अबाउट इट बाकी रहला मैडम आपनको बहिर 100% सक्सेस आई एम एक्सपेक्टिंग अब जो थी पई आपण लिखि चंती जे जो माने जानि नाहंती कि कनेक्ट करनान से माने कनेक्ट करंतु आई होप कि आपनको no, your Lord Jagannath should bless you that this book should reach to people who don't know about him. It is very, very important. And it's a good initiative, really a good initiative. Baki, this is the book. Again, I'm showing to the camera. And our availability, madam, Odisha रे जदि के किनिया पई चाहिबे कोठी किनिबे हाँ सीए एके मिश्रा स्टोर्स रे अछि कटक एंड भुवनेश्वर इट इज इन पद्मालय स्टोर इन भुवनेश्वर एंड इट इज इन मॉडर्न बुक स्टोर इन भुवनेश्वर and it is available pan India on Amazon plus even outside India the Kindle version is available in all the countries globally. Okay, great. So I hope वर्तमान रथ यात्रा सेशन रे हमें in-depth discussion को छाड़ी की we tried to connect to somebody who really trying something बाहर रहउथिबा लोक माननको पाई so it's a good initiative मैडम को all the best कहबा नाजर पॉडकास्ट को हमें एठी रखिबा पुन थे देखा हबो नुआ गोटे टॉपिक सहित नुआ जने गेस्ट को सहित सेति समय पर्यंत साइनिंग ऑफ लेखिका बनस्मिता नमस्कार Thank you.